welcome to Data Literacy Podcast and this is Episode-01. आज मेरे साथ मेरे स्कूल के फ्रेंड मनीष थपड़ियाल जुड़े हुए हैं. मनीष थपड़ियाल is a data engineer at American Express. So welcome Manish and thank you for your time. Yeah, So thanks for having me here. Really excited for this. So let's start with your introduction. What are you doing at American Express and how you ended up there? So hi everyone. I'm working as a data engineer at American Express, and it's been like 1.5 years now. I've been with this company, and जैसे प्रभांशु ने बताया हम दोनों school friends हैं, so it's a long friendship. And I was very really excited for this podcast because I'm a regular follower of his YouTube channel and was looking forward to get it hydrated again. So yep. A little background history. हम लोग 7th से 12th तक आई गए साथ पढ़े on the same school केंद्र विद्यालय कांची. So and हमारा recap ऐसे हुआ कि we were in the town और मैं भी एक डॉक्टर को विजिट कर रहा था और मनीष भी एक डॉक्टर को विजिट कर रहा था. देयर भी हमने वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं रियूनियन हुई. सो दैट इज अबाउट आवर हिस्ट्री. सो मनीष we have the same background, science background. Tell us more about your college and how you ended up at American Express. Yeah, so I think from the very start we had the computer science as a major in our 11th and 12th. I think वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी सी IT फील्ड की तरफ ट्रैजेक्ट होने लग गई थी. So I was very versed with the computer field and I was very interested in the field as well. So I gave the JEE main like every engineering aspirant and got into NIT Uttarakhand. But I didn't have the computer science as my majors in engineering. So I was looking forward to convert it into the computer science, but later on realized that you can make the career into the IT field irrespective of your branch. So while being in my first year, I realized कि जितनी भी companies आती हैं college में, they give equal opportunities to electrical and electronic streams as well, which are essentially the subject matters. So I rather focused more on upskilling myself into the computer field while being in the electrical branch itself, rather than diverting my focus into changing my branch and then giving too much effort to the academics. So yeah, that was the thing. I wanted to keep my skill set diverse. So मेरा ऐसा था कि मेरे को electrical भी पढ़नी है so that I can diversify my skill set, because कुछ electrical की भी companies आती थी core, and I started liking the field while being in my first year itself. मुझे electrical भी पसंद आने लगी थी, but I wanted to be what do you say, in pace with the technology. तो मेरा ये था कि ठीक है यार कंप्यूटर साइंस भी सीख लेते हैं. देयर वर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉमन इन इंजीनियरिंग. तो फिर मैंने सेकंड एंड थर्ड ईयर के ऑप्शंस कुछ कंप्यूटर साइंस के भी रखे थे. सो आई गेट द टेस्ट ऑफ बोथ द ब्रांचेस. तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट ही हो गया था. सो ट्रीडेंस वाज द फर्स्ट कंपनी दैट विजिटेड कॉलेज. और मेरा ये था कि जितना जल्दी प्लेसमेंट ले लेते हैं उतना फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढनी थी. और आई वॉज फोकस्ड ऑन गेट एज वेल. तो मेरा ये था कि मुझे इलेक्ट्रिकल थोड़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो आई वांटेड टू डू माय मास्टर्स एज वेल. So I had got a decent rank in GATE as well and got IIT Delhi, but time पे फिर कोविड वाला सिनेरियो आ गया था, so that is a different story altogether. So I thought to join the company and move with the career. So that's how I landed with Tridence. And Tridence जिनको नहीं पता वो एक प्योर एनालिटिकल एंड डेटा इंजीनियरिंग डेटा साइंस कंपनी, राइट. इट्स अ कंपनी दैट इज रियली वेल वर्स्ड विद दिस एआई इंडस्ट्री एंड द डेवलपमेंट्स अराउंड इट. तो मेरे जो स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो डेटा इंजीनियरिंग डेटा साइंस की तरफ ही जाने लगे, एंड दैट्स वेयर आई गॉट द चांस टू वर्क इन दिस एंड इवेंचुअली डेवलप इन द सेम. ये काफ़ी सही मुद्दा उठाया कि यूजुअली बच्चों को ही रहता है. मैं भी अपने सर्कल में काफ़ी देख रहा हूँ कि नहीं यार कंप्यूटर साइंस लेनी, क्योंकि एक ऐसा ऑब्वियसली थोड़ी जॉब्स ज़्यादा हैं शायद इस सेक्टर में, बट स्टिल
अदर ब्रांचेस को लेके काफ़ी फियर है कि अगर यार मैं मैकेनिकल लूँगा तो शायद मेरा प्लेसमेंट इतना बढ़िया नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स लूँगा तो शायद प्लेसमेंट इतना बढ़िया नहीं होगा. सो आई थिंक यू रेज्ड अ क्वाइट गुड एंड हॉट पॉइंट जिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. बिफोर दैट मैं एक चीज़ मतलब आई वांट टू टेक योर फीडबैक ऑन दैट. I think electrical is one of the core branch. Like I think computer science originates from electrical branch, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे कॉलेज में भी थे जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे, उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में. तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके ही आईटी फील्ड में जा सकते हो. यू कैन गो इट फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज. और मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ बीटेक नहीं, आप दूसरे सेक्टर से भी, इवन इफ लाइक यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, सो आई थिंक यू हैव इक्वल स्कोप. वी विल टॉक अबाउट द नेटफ्लिक्स स्टोरी एट द एंड ऑफ द सेशन, बट do you want to add something on that, like on the branch specific thing? We will talk about that more. Totally aligned on that. I believe यार अभी तो बहुत सारे साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज भी अब डेटा फील्ड में स्टार्ट हो गए. फॉर एग्जांपल देयर इज अ रीसेंट वन फ्रॉम आईआईटी मद्रास, यहाँ पे वो 3 साल की बीएससी डिग्री कराते हैं डेटा साइंस, एंड दैट आल्सो हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट टू द एस्पिरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस डेटा साइंस. तो आई थिंक अभी रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच हो गया है, प्लस जितना ज़्यादा अभी ये इंटरनेट की रीच बढ़ी है राइट ऑडियंस के लिए, तो नाउ दिस कॉलेज ईयर हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग लेसर रोल. बिकॉज हमारे टाइम पे क्या होता था, if you don't get a good college you will not get good placements. But abhi aisa hai ki since everyone has the access to various platforms like LinkedIn, naukri.com and all, so anyone can search on the platforms, and I think opportunity पे काफी ज़्यादा मतलब it's a level playing field for everyone. I think अब ये वाला जो criteria है कि college decides your placement is not that much. Okay, we will हम रोल्स और स्किल्स के बारे में और बात करेंगे आगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ डेटा इंजीनियर, लाइक काफ़ी सारी सिमिलर जॉब रोल्स में कहूँगा या जॉब टर्मिनोलॉजी है, जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, काफ़ी सारे सिमिलर से रोल है. तो कई बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि व्हाट इज़ द राइट रोल फॉर मी. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट डू यू डू एज डेटा इंजीनियर, एंड कि तुम्हारा क्या रोल है एज अ डेटा इंजीनियर, लाइक व्हाट डू यू डू एज अ डेटा इंजीनियर एट अमेरिकन एक्सप्रेस. So I think data engineering is also divided into multiple segments, right? So there are two sides of it. Either you are a developer in the data engineering, or you are playing a role of more of an administrator where you manage the infrastructure of your company. Right now at American Express मेरा अभी काम जो है वो है to provide the insights to a business insights team, right? So I'm a part of credit and fraud risk business unit at American Express, and my team, which is the business insights team, वो एक central repository for the CFR business unit, right? So whatever definitions, trends, right, predictive analytics, whatever is happening at American Express, we are the team that provides the ultimate definition to the leadership. Right? If there is any specific variable, the leadership will reach out to our team, will ask how this variable is created and what sort of insights can be drawn out. So we are at a mid of this complete journey. हम कुछ data analytics भी करते हैं, हम थोड़ी बहुत data engineering भी करते हैं जहाँ पे हम pipelines वगैरह develop करते हैं from the very scratch, right? Getting the data from the source and then massaging the data and then syncing it out into some storage systems, and also then trying some insights in the form of some visualization or other tools, for example a pivot report or PowerPoint. So it's a mix for me. काफ़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों पे. एक्चुअली एक आई वाज रीडिंग अ बुक जिसका नाम है बिल्डिंग करियर इन डेटा साइंस. तो उसमें स्पेशली जो उसकी ऑथर है, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें आई विल कम टू द कंक्लूजन. तो उसमें वो ये कहती हैं कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि जो स्पेसिफिक रोल आपको डिफाइन किया, लाइक डेटा इंजीनियर अगर आपने एक कंपनी में स्पेसिफाई कर दिया है तो दूसरी कंपनी के डेटा इंजीनियर भी वही काम कर रहे हैं. द थिंग इज़ दैट कि डेटा रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो काफ़ी नई है मार्केट, तो कंपनीज को भी नहीं पता है कि उस एग्जैक्ट रोल में करना क्या है. तो माई क्वेश्चन इज दैट अगर कोई डेटा इंजीनियर किसी डिफरेंट कंपनी में, लाइक डेटा इंजीनियर एट अमेजोन, तो उसके रोल्स
आपसे कितने अलग हो सकते हैं और क्या बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं. So that's the thing. Got it. So eventually ये I totally agree to this conclusion you drew out of that. So basically ये जो line है, right, data analyst, data engineer, ML engineer and whatever these things are, ये बहुत ज़्यादा मतलब defined नहीं है, right? There will always be some kind of an overlap that you will be seeing in different companies, right? But essence will always remain the same. If you are a data engineer, you're somehow in this whole story, right? You will be building some data pipelines, you will be building some architecture, some scalable systems. So right, ये सब architecture designing आप definitely कर रहे होगे. In addition to that, there could be some other things also जो कि आपको करनी पड़ेंगी, right? Which could overlap to data analyst, कि आपको उस डेटा से फिर कुछ इंसाइट बना के कुछ एंड प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, या फिर यू विल बी टोटली इनटू द सोर्स साइड ऑफ द डेटा इंजीनियरिंग, की आपको डेटा मॉडलिंग करनी पड़ रही है, जो डिफरेंट डेटा सोर्सेज आ रहे हैं उनको कंबाइन करके कुछ फाइनल टेबल्स बनानी पड़ती हैं, राइट? दैट विल इवेंचुअली बी पास्ड टू द डेटा एनालिस्ट, राइट? तो अगेन वही वो जो लाइन है, दैट इज वेरी वे, इट्स नॉट वेरी धागे भर का अंदर है, मतलब मे भी शायद आप इस धागे के इधर डेटा एनालिस्ट हो और इस धागे के इधर एमएल इंजीनियर और इस धागे के इधर डेटा इंजीनियर. आई थिंक थोड़े से हैवी टर्म हो गए लाइक डेटा मॉडलिंग वगैरह. तो अगर हमें डेटा इंजीनियरिंग एक बहुत ही लेमन टर्म में एक्सप्लेन करनी हो, लाइक इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ 5-year-old, हाउ विल यू डिफाइन डेटा इंजीनियरिंग? That's a tough one. But मतलब you can explain in a way कि जैसे एक 5 साल का बच्चा है, राइट? वो छोटे छोटे खिलौने से खेलता है, राइट? You must have seen those छोटे छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके हम like Lego blocks, राइट? हम कुछ इवेंचुअली उससे फिगर बनाते हैं. डेटा इंजीनियरिंग इज एग्जैक्टली द सेम, राइट? देयर आर मल्टीपल पीसेस जिनको आपको इवेंचुअली एक स्ट्रक्चर देके you will have to make a meaningful structure of it, right? So data engineering is like collecting different blocks and then making insights from those pieces and then giving a actual figure to the end user. The second part of this question is like अगर कोई बच्चा 11th या 12th में पढ़ा, like he's around high school, तो वो डेटा इंजीनियरिंग को कैसे समझे? जिसको अब इसमें अगेन 2 सेक्टर हैं, लाइक जिसको कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है, एंड अ नॉन टेक बैक subject. So I'll give an analogy in that way. So I mean everyone has seen some kind of an industry, right? For example, let's talk about the car manufacturing. Just take an example. तो अब आपने कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखा होगा कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, कार के पार्ट्स होते हैं, कहीं पे खिड़की पड़ी है, कहीं पे चेसिस पड़ा है, कहीं पे विंडशील्ड है, कहीं पे टायर्स पड़े हैं. All of these chunks of the car components are essentially your data sources, right? इन डेटा सोर्सेज को आपको कंबाइन करके आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो आप इंडस्ट्री में भी यही करते हो, राइट? डिफरेंट पार्ट्स को आप कंबाइन करके एक फाइनल कार का स्ट्रक्चर बनाते हो. आपने चेसिस में विंडशील्ड लगा दी, आपने उसमें टायर्स लगा दिए, आपने उसमें विंडोज एंड डोर्स लगा दिए, राइट? आपने उसके अंदर कुछ फीचर्स डिफाइन कर. ये सब चीज़ें आपकी डेटा मैसेजिंग का पार्ट होता है कि आपने सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया, एक स्ट्रक्चर दे दिया. नाउ आप इसके बाद क्या करोगे इंडस्ट्री में? उस कार की उस पर उसको पेंट करोगे, राइट? उसको उसके अंदर कुछ फाइन फीचर्स प्रोवाइड करोगे, स्टीयरिंग लगा दिया, या फिर आपने उसके अंदर सीट्स लगाई, उसके लेदर्स लगा रहे. तो डेटा इंजीनियरिंग का ये वाला कंपोनेंट आपका वही आ जाता है कि एट द एंड आपने जो भी आपने टेबल्स बनाई हैं, फाइनल स्ट्रक्चर बनाई, इनको डिफरेंट एंड यूजर्स के लिए आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया, राइट? फॉर एग्जांपल सेल्स टीम के लिए डिफरेंट डेटा जा रहा है, राइट? एनालिटिक्स के लिए कोई डिफरेंट डेटा तो. और इसके बाद फिर आपका कार की सेफ्टी के लिए आप अलग अलग फीचर्स लगाते हो, एयर बैग लगा दिए, सीट बेल्ट्स लगा दिए. सिमिलरली डेटा के केस में फिर वो डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है कि आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, डेटा की गवर्नेंस मतलब इट शुड बी कंप्लायंट विद द इंडस्ट्री, राइट? सो दोस, सो आई मीन that would be an analogy that can be provided to a high student and then college someone who has experience in this. It's like designing a supply chain जहाँ पे हम ये फिल्टर कर रहे हैं कि किस पैकेजिंग में क्या सामान जाना है. लाइक स्टेशनरी वाला सामान स्टेशनरी में ही जाना चाहिए, फूड वाले में नहीं जाए. तो वो काम होता है डेटा इंजीनियरिंग. ओके, सो
नाउ अब ये काम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक अगर किसी कंपनी में हाइपोथेटिकली डेटा इंजीनियर ना हो, लाइक हाउ विल योर कंपनी ऑपरेट, आई मीन अमेरिकन एक्सप्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा इफ दे डोंट हैव अ डेटा इंजीनियर लाइक यू? तो यार वही मतलब डेटा इंजीनियर एक बेसिकली बैकबोन होती है किसी भी इंडस्ट्री की, राइट? और डेटा इंजीनियर का काम बेसिकली होता है कि एक स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना किसी कंपनी के लिए, राइट? इवेंचुअली अगर कोई कंपनी काम कर रही है, उससे कोई एंड यूजर्स होंगे तो वो कंपनी से इंटरेक्ट करेंगे और वो इंटरेक्शन ही डेटा है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ई कॉमर्स साइट का एग्जांपल लो, राइट? आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हो, वो सब डेटा अल्टीमेटली रिकॉर्ड होता है, और अगर आप उस डेटा से कुछ इंसाइट्स नहीं बना पाते तो फिर आप उस डेटा को जस्ट गार्बेज की तरह ट्रीट कर रहे हो, राइट? कुछ टाइम के लिए आपकी कंपनी स्टेगनेट रह सकती है, बट इवेंचुअली इट विल लीड टू अ डाउनफॉल, राइट? एग्जांपल के लिए यू टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉलमार्ट, राइट? एक टाइम पे वो कंप्लीटली ऑफलाइन स्टोर्स का पूरा स्ट्रक्चर था इन द यूएस, right? But eventually, with the growing need of data and digitization, they moved to the online platforms, right? And now it's, I think, one of the dream job of a data engineer. Yeah. तो eventually मतलब अगर एक डेटा इंजीनियर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो क्वेश्चन में आ जाएगी। फॉर अ फाइनेंस कंपनी लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, जहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फाइनेंसेस ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे अगर आपका कोई डेटा इंजीनियर काम नहीं कर रहा है तो मे बी कुछ ऐसे डेटा होंगे जिसके एलिमेंट्स आपके सिक्योर होने चाहिए, राइट? इट शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द डेटा ऑडिट, बट इन एब्सेंस ऑफ द डेटा इंजीनियर मे बी वो फिर रिस्क में आ जाएंगे, राइट? एंड अगर आपका फाइनेंस कंपनी का डेटा रिस्क पे आ गया तो आपकी आई थिंक कंपनी रिस्क पे आ गई, राइट? सो दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू इट, बट या लाइक आई सेड, डेटा इंजीनियर इज अ बैकबोन ऑफ एन इंडस्ट्री. If data is not there, I'm not sure how the company is surviving. Even if data is there and there's no one to manage that data, then that data you makes must have no heard sense. that statement, right? Data is the new oil. So Yeah, like yeah, oil data is is the new one. And also there are some sayings like that कि अगर World War 3 होगा तो डेटा की वजह से होगा या डेटा के बेस पे लड़ा जाएगा. Okay, so coming to the skills, I would like to share a page, a website. तो ये एक वेबसाइट है डेटा नर्ड करके, इसमें स्किल्स और सैलरीज इंसाइट रहती है कुछ डेटा रिलेटेड जॉब्स की. सो इफ आई विल गो विद डेटा इंजीनियर जॉब, तो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, अगर हम टॉप 5 स्किल्स की बात करें एज अ डेटा इंजीनियर, तो SQL, पाइथन, AWS, एज्योर और स्पार्क का जिक्र हुआ है इसमें. जावा है, बट आई थिंक जावा विल कम to the 6th most favorable skill. So इन स्किल्स को कैसे डिफाइन करना चाहोगे आप कि ये स्किल आपके लिए कितनी यूजफुल है, एंड is there anything that is not present here but required to get a, especially in India, because right now we are talking about that, we will come to the Indian perspective. So go ahead. So yeah, I think it's very well ordered, right? So मतलब one good thing about this data domain is the skill set remains the constant. I mean, it remains almost same everywhere, right? Although your role and responsibility might change, but eventually you'll be working with these tech stacks, right? So जैसे if I take my example, so I work a lot on Python, right? Because irrespective of your role, whether it's a data engineer हो आप या data analyst हो या फिर business analyst हो, or even the machine learning engineer, Python is something that will help you not only in developing some automation utilities, but will also help in some predictive analytics or any kind of data science related stuff. So Python is the language. So it's the top-notch programming language, of course, or a scripting language, of course, which is there in the data engineering domain. SQL, I believe, ये यार 70 to 80% of data engineering skill set बनाता है, right? If you don't know SQL, I mean, you should not be in a data कैसे निकालोगे? सही बात. Exactly, right? फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ आनी चाहिए, वही वाला. और AWS, I mean, cloud is something good to have. It's not a necessity. Must have.
yeah, it's not a must-have skill. It's like a good-to-have skill. If I talk about American Express, right? So we are an on-premises company. To the ओके। audience, on-premises का मतलब है we are not on cloud. हमारा अपना एक infrastructure है जो कि basically monolithical architecture पे काम करता है. मतलब it's a distributed architecture, but it's not on the cloud. It's not scalable, of course. So अभी जो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो नेक्स्ट बिग स्टेप है इन द डेटा इंजीनियरिंग डोमेन वो है जीसीपी में माइग्रेट करना, राइट? तो वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट. वी आर बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर भी क्लाउड पे माइग्रेट होने वाला है. एंड देयर आर लॉट ऑफ सच कंपनीज. मोस्टली यू विल फाइंड द फाइनेंशियल कंपनीज जो कि अब क्लाउड पे मूव करेंगे बिकॉज जो फाइनेंशियल कंपनीज का डेटा होता है, आई मीन दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर डेटा. possessive about their data. Exactly. So public cloud पे I think they were not having that kind of trust that these cloud platforms I mean what do you say guarantees कि आपका data secure होगा ही होगा, right? Of course it's a public cloud तो फिर आपका different organization का data उनके servers पे, तो your data would be at risk. ये एक मतलब myth हो सकता है किसी कंपनी के लिए, right? But I won't go to that debate. तो it's but I think they are a well established company. उनका business उस पे run करता है, तो and there's a lot of protocols to secure your data. Like especially अगर हम European countries की बात करें तो उनका GDPR compliance is like very secure. So I think it's like just a conservative thing कि नहीं हमें अपना data preserve करना, but once you go to the cloud everything is like cream. मतलब आपको सब कुछ streamlined मिलता है. So, हाँ, मतलब अभी के स्टेज पे if you are not on cloud then again वही वाली बात है कि यार आप इनोवेट नहीं कर रहे, इवेंचुअली वो डाउनफॉल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आप अपने सिस्टम को कितना स्केलेबल बना सकते हो. और थिंक ऑफ इट कि हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है, डेटा एक एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज होता जा रहा है. यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर मोनोलिथिक ऑन प्रीमिसेस. तो आई मीन इवेंचुअली मेरे को लगता है कि ये जो क्लाउड वाली स्किल आपने इस लिस्ट में लिखी है, राइट, अज्योर और जीसीपी और AWS, ये मस्ट हैव स्किल हो जाएंगे अभी के लिए. इट्स स्किल इन इंडस्ट्री सारे हो जाएंगे. मे बी शायद अमेरिकन एक्सप्रेस पे ना हो, बट सम कंपनी दैट इज ऑलरेडी ऑन द क्लाउड उनके लिए शायद मस्ट हैव होंगे. Even so I was before American Express I was working with Credence, right? And when during the time I started giving the interviews, I think cloud was a must have skill only, क्योंकि कई सारी कंपनीज क्लाउड पे ही काम करती हैं. फॉर एग्जांपल Adidas was one of the company where I got the offer. They are in AWS. They had this skill as a must have skill कि आपको AWS आना है, right? तो there are some companies जहाँ पे अगर क्लाउड की नॉलेज नहीं है तो you would be at a loss. But हाँ, मतलब इवेंचुअली हर एक कंपनी क्लाउड पे माइग्रेट करती है. इट्स समथिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस. इसके बाद यार स्केला, आई थिंक ये बहुत रेयरली यूज होती है. मतलब आई वोंट से रेयरली यूज होती है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज जहाँ पे चॉइसेस मिलती है ना आपको पाइथन स्केला पे काम करने के लिए, कंपनीज गो विद पाइथन बिकॉज वो एक सिंगल लाइसेंस पे आपके मल्टीपल काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको ML इंजीनियर से भी काम करवाना है, उनको डेटा इंजीनियर से भी काम करवाना है. Like I said, Python is a language of data science. So, and I think Scala is like for old fellows, like जो लोग काफी पुराने इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो Scala पे काम करता है. I don't think a new engineer that is coming from our background even उसको कई बार पता भी नहीं होता कि यार Scala है क्या. exactly. Even मेरे को भी नहीं पता जब मैंने पहली बार Scala सुना था तो मैंने कहा यार Scala क्या चीज़ है. So I don't think a lot of data engineers might having idea about that Scala. It has a Java flavor of programming language, so people usually avoid because of the complexity. But हाँ, मतलब eventually अगर आप performance perspective से बात करोगे तो Scala is way better than Python. But yeah, अभी के लिए तो यार Python ही basically. इसके बाद Excel is more of a data analyst thing, but like I said, आपका role कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी. It's good you know. So we I think सारी skills तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. लेट्स टॉक अबाउट द जॉब. लाइक अगर मैं अराउंड द ग्लोब बात करूँ तो ये डेटा इंजीनियरिंग की कुछ 5 लाख जॉब्स के अराउंड दिखा रहा है. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 25,000 के अराउंड कुछ वी विल कंसीडर 26,000 के अराउंड जॉब्स जो है डेटा इंजीनियर की दिखा है. तो हाउ रेलिवेंट इज इट क्लोज टू द रियलिटी और Yeah, I think more or less ये numbers eventually इससे ज़्यादा ही होंगे. I think अभी तो market conditions पे भी depend करते हैं.
ये ऑल आर इन रिसेशन सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। तो हम्म, ये आई थिंक मैं जब स्विच कर रहा था उस टाइम पे दीज नंबर्स वर क्वाइट। तो जैसे मैंने बताया राइट कि जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस अभी क्लाउड पे माइग्रेट कर रही है, तो कुछ टाइम पे क्या होगा ना कि डेटा इंजीनियर रोल्स जो अमेरिकन एक्सप्रेस में है वो एकदम से दिख जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा डेटा इंजीनियर्स चाहिए होंगे जिनको स्किल सेट आता है क्लाउड का, राइट। और अभी लाइक आई सेड कि कई सारी कंपनीज हैं जो पहले ऑफलाइन थी अब डिजिटाइज हो रही हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट, दे आर टोटली ऑनलाइन, राइट, like us. लाइक योर्स। तो इवेंचुअली डेटा नीड्स तो यार हर कंपनी की होगी, दैट्स व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द कस्टमर नाउ। तो ये रोल्स तो इवेंचुअली राइज होंगे, एंड आई थिंक दीज नंबर्स आर क्वाइट लेसर कंपेयर्ड टू व्हाट एक्चुअली इज इन ऑफिस। So I think the conclusion is that कि डेटा जॉब्स जो है वो राइज होंगी स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज अभी हालांकि रिसेशन चल रहा है बट देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस स्कोप इन इंडिया, एंड बाहर की काफ़ी सारी कंपनीज भी एक इंडिया को स्पेशली, हम उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहेंगे कि चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना चाहती, बट द कंक्लूजन इज दैट कि हाँ, द डेटा जॉब्स आर राइजिंग एंड वी नीड स्किल्स टू उस जो गैप क्रिएट होने वाला है जॉब्स का और स्किल्स का, उसको मैच करने के लिए हमें अपस्किल करने की जरूरत है। सो आई थिंक दैट्स more or like about it. Just last question that is like Mythbuster. Is there some sort of paradox in this industry where fresher have a hard time getting a proper data engineer job as they won't have experience, and they won't have experience until they work as a data engineer? So is it true or is it just a myth? Quite a thoughtful question. मतलब यार मतलब फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैंने 2020 में अपना करियर स्टार्ट किया था, आई थिंक दिस वाज वेरी ट्रू, क्योंकि थिंक ऑफ इट ना, मतलब माय करियर नाउ राइट नाउ इज इन डेटा इंजीनियरिंग डोमेन, और मुझे क्लू भी नहीं था कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होगा। तो उस टाइम पे सिनेरियो ये था कि अनलेस आपको कंपनी खुद अपॉर्चुनिटी ना दे डेटा साइट पे काम करने की, आई थिंक आप खुद से ये चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स सम कैपिटल। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप आर्किटेक्चर होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को रन करोगे, आप अपने डेटा सेट्स बनाओगे, राइट। यू शुड बी हैविंग अ बिग वॉल्यूम ऑफ डेटा डेटा इंजीनियरिंग इवेंचुअली अप्लाई करने वाले, और ये एक बंदा ना कभी भी खुद से अपने आप से नहीं कर सकता, राइट। अगर आपको एक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो यू जस्ट नीड टू हैव अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, बट अगर आपको सीखना है and a course, an online course, यूडेमी कोर्स, yes. बट अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग सीखनी है तो यार आपके पास पूरा का पूरा स्केलेबल आर्किटेक्चर होना चाहिए, राइट, जो पहले एज अ सर्विस प्रोवाइडेड नहीं। तो लोग स्ट्रगल करते थे कि यार ये चीज़ में कैसे, वो तभी सीख सकते थे जब कंपनी उनको अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि उनके पास वो आर्किटेक्चर है, उनके क्लाइंट्स के पास वो आर्किटेक्चर। बट अभी तो यार ये है कि मतलब आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि अब आपको ये एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यू पे देम सम अमाउंट और वो आपको एक बिग डेटा का पूरा सिमुलेशन ला के दे देंगे जिससे आप अपनी डेटा इंजीनियरिंग सीख सकते हो। और अभी कंपनीज ने कॉलेजेस में रिक्रूट करना भी स्टार्ट कर दिया है स्पेसिफिक फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल। Amazon right now has started recruiting for data engineering position, जो हमारे टाइम पे नहीं होता। पहले आई थिंक अपने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स के लिए आते थे, बट नाउ अपॉर्चुनिटी, and I can still imagine that scenario in the placement, like सब लोग competitive coding में लगे होते थे solving the problems, but I don't think that is the case anymore. Yes, exactly. So I mean coding is required for data engineering, but वो उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। अगेन इट्स अ बिग डिफरेंस। सो आई थिंक काफ़ी सारी बातें हैं जो हम और कर सकते थे और की जा सकती, बट वी विल कीप द स्कोप लिमिटेड। और अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ भी जानना रहेगा तो दे कैन ऑलवेज जॉइन आवर कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। बाकी मैं मनीष का लिंक शेयर कर दूंगा, इसको खूब परेशान करना लिंक्डइन में, एंड डू फॉलो हिम। And just one thing, if you would like to give a message to our viewer, your thoughts, I will like you to sum up this podcast. I would just say, I mean, considering the audience, the future teachers and mentors as well as the students as well. So for the teachers, I think everyone. I mean, the technology is booming at a very fast pace, और जो हमारा कन्वेंशनल इकोसिस्टम है एजुकेशन का, आई थिंक दैट आल्सो नीड्स टू चेंज अ लॉट।
अगर हम वही कन्वेंशनल एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को देते जाएंगे तो आई थिंक दे विल बिकम मोर एंड मोर इररेलेवेंट टू द जॉब मार्केट, राइट? आई थिंक दैट्स द सिनेरियो इन इंडिया, राइट? अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो ग्रेजुएशन के बाद एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, और आपका पूरा यूथ जो है वो उसमें वेस्ट हो जाता है. So I think our focus should be, to upskill the students so that they are ready in the job market. Right? They should have this opportunity to, pursue the dreams they want, be it a government job, right? Be it becoming an IAS officer or something. But if they don't end up there, then they should be having some plan B, right? Which should be their skill set. जिसके basis पे वो अपना career बना सके. For the students, I think they should rather focus on upskilling themselves. The same thing, same mantra. And like I said, right, college and branch doesn't matter a lot. I mean, to me it really didn't. And I think जो future scope है market का, वो यही है कि I think अब बहुत ज़्यादा level playing field पे अब students को judge किया जाता है, right? अब ये branch, college, all of these things doesn't matter. If you have a skill, then there is something in the market. So keep up. I love your message, especially the part that you say that I think that you are trying to say is कि हम नॉलेज से लिमिटेड ना हो, भले ही मतलब लाइक एटलीस्ट हमारे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ऐसा ना हो कि हमारे पास उसको ग्रैब करने की नॉलेज है. आई थिंक दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. सो थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड होपफुली वी विल if our viewers like this episode or more questions आएंगे तो we will surely have some more such sessions. So thank you and bye. Thanks to everyone. Thanks for having me. My pleasure.